All right, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to announce that we have now reached the main highlight of today's conference, which is the keynote address by our chief guest, Shri Anil Agrawal, Additional Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. And on the dais for this session, we will have Mr. Anil Agrawal, Mr. Kunal Bahl, co-founder AceVector Group, and Mr. Kapil Makhija, CEO, Unicommerce. May I request Mr. Kapil Makhija to kindly come up on the stage to formally welcome our chief guest, Mr. Anil Agrawal, to this session and invite him to the lamp lighting ceremony. Mr. Kapil Makhija. Hello all, it's my pleasure to have you all here and have Mr. Anil Agrawal being on the stage. I'll request Shri Anil ji to come on the stage and grace us with his presence. Hello. Am I audible? Yeah. This is to welcome Kunal as well on the stage. Kunal, happy to have you here and would hand it over to you to take the session forward. Thank you. Thank you, Kapil, and thank you to all our guests here. I'm really thrilled with the response we've gotten to the Unicommerce Saral event. It's the first time we're doing this event offline, and the reaction from what I've gathered in the morning, we had over 2,000 attendees here, and it's been quite phenomenal in a post-COVID era. It seems we all do want to meet each other physically. It's my great pleasure and privilege to welcome Shri Anil Agrawal, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. DPIIT is the nodal department in the Ministry of Commerce and Industry responsible for e-commerce in India. And sir, you personally have played a critical role, which I've seen from my own eyes, in guiding, shaping, nurturing India's e-commerce sector. The direct-to-consumer brands, as well as so many technology businesses that are making this a thriving ecosystem. In the last 6-7 years, DPIIT has done tremendous work in promoting India's startup sector from Digital India, Startup India, and much, much more. From framing thoughtful policies and guidelines to coordinating with other ministries to ensure that the path ahead for the e-commerce sector in particular and startups in general is smooth and enabling. I recollect with gratitude, sir, the extensive help that DPIIT extended to India's e-commerce sector during the COVID pandemic. It is due to your unwavering support that the sector overcame all the challenges and stood strong to serve all these segments of society. Sir, you've been an active supporter of Indian startups, applauding and encouraging the D2C brands, marketplaces, and technology businesses, giving them the confidence that there is no better time to grow in India than now, and not just within India, but also globally. And hence, I'm particularly glad to welcome you this year to Saral, which is an event hosted by Unicommerce.
So Unicommerce is India's leading integrated SaaS platform. It was established about 10 years ago and serves as the backbone for India's retail and e-commerce sector, offering a comprehensive range of contemporary technology solutions. It helps brands and e-commerce companies, many of whom are represented in this room today and at today's event, to manage their entire supply chain operation from a point a customer places an order to the point the customer receives her order. The entire process is managed seamlessly by Unicommerce's suite of SaaS products. Many other aspects of order management, inventory management, omni-channel, warehouse management are also similarly powered by Unicommerce. The success of all this hard work and constant innovation is evident in where Unicommerce has reached today. I'm proud to share that Unicommerce processes over 20% of India's e-commerce volumes with over 500 million annual transactions amounting to over $5 billion a year. And a wide range of India's brands, both old, new, online and offline, are powered by Unicommerce, not just in India now, but also across 14 countries in the Middle East, Africa, and Southeast Asia. The golden age of India's startups is here, and I'm confident that SaaS companies like Unicommerce will bring made-in-India solutions to the entire world as we extend India's reach and soft power to new realms of technology and global influence. Sir, none of this success would be possible without your support and that of the startup-friendly government that you represent. DPIIT is constantly thinking, innovating, and planning ahead, and ONDC, as we've discussed before, is one such mega initiative, and I'm sure there'll be many more. May I request, sir, to please share your thoughts and perspective with the audience. Thank you again. We are truly pleased and blessed with your presence, sir, and we would love for you to join us kindly for the lamp lighting ceremony before we hear from you, your wonderful thoughts. So, ladies and gentlemen, please help us amplify this moment with your love and your applause. Big round of applause. Thank you so much. Thank you very much, sir. And we would now love to hear your words. Thank you. Do I need this or this will be? Am I audible? My heartfelt gratitude to Kunal for having me here in this event. Friends, it is an honor and a privilege to be with you today in this huge event of Unicommerce. You know, I was not aware of what Unicommerce does till about 10 minutes ago, honestly. So it is only when Kunal told me that, you know, we are the backbone of whole lot of e-commerce companies in India, it is a revelation to me. I have also been told that we have a number of young entrepreneurs here who have their own e-commerce companies. We have people from Tier 2 and Tier 3 and Tier 4 cities from across the country who are looking forward
to utilization of newer technologies in whichever domain they are functioning today. I have this unique chance of telling you something about what we are trying to do in the Government of India at ONDC. You are all familiar with e-commerce. And you know, this idea of open network, it struck us about 2 years ago. That was March 20, when, you know, this COVID pandemic hit all of us. And the nation was put into a severe lockdown. All houses were locked, but all citizens, wherever they were, whether it was multi-storied colonies, or there were these mohallas, small mohallas or gullies and everywhere, they were all locked down in their own houses, not allowed to come out. But everybody needed essentials to be able to survive. Gehu, chawal, aata, sabji, फल और दूध, ये सबको चाहिए even when you are confined to your homes. And you know, that was the problem that we were trying to solve. So in our ministry, our minister, Mr. Piyush Goyal, he identified 5 and 6 broad areas where the government should be proactive and try to connect with stakeholders, identify solutions and see if we could implement them. So one of the tasks was given to a group that I was leading, and it was to figure out technology and innovative solutions to problems that are faced by citizens during the COVID time. So one of the problems that we identified was supply of essential items to citizens entrapped in containment zones during the COVID time. We worked with a number of district authorities across the country. Now, how do you do it? So you try to see if there is some local e-commerce player, and then you see if in a particular mohalla where you want to, you know, give the supplies, whether that person is on some e-commerce platform or not. And then you try to onboard him to that particular platform, and then try to connect him with the consumers locally. It is all happening locally. Now, then we realized it is such a tedious process to onboard a grocery store on an e-commerce platform. Extremely difficult. Probably one of the most, I'm sure, this is one of the difficult most categories across all, you know, goods traded on e-commerce platforms. So you onboard one particular trader on one platform, and then you realize कि उस मोहल्ले में उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले लोग केवल 10% हैं. So उसी ट्रेडर को आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ऑनबोर्ड करना है, फिर तीसरे पे भी करना है, तब जाकर के यू विल बी एबल टू सर्व द एंटायर सोसाइटी. नाउ यू नो, व्हेन वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड optimal ways of doing what we are trying to do, we just ask ourselves, is it possible to standardize these operations? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉमन कैटलॉग अवेलेबल हो सबके लिए, और उसमें जो शॉपकीपर है उसको केवल ये कहना पड़े कि ओके, दिस इज द आइटम, ही टेक्स द पिक्चर्स, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से जितना डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है, because it is all done by FMCG companies, by branded companies, by milk companies, वो सब है, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है. शॉपकीपर को केवल ये कहना है कि मेरे पास ये आइटम है, इतने नंबर ऑफ आइटम्स, एंड दिस इज माई प्राइस. दैट्स ऑल. वी वांट टू मेक इट दैट सिंपल टू ऑनबोर्ड अ पर्टिकुलर ट्रेडर.
And imagine in a grocery shop where typically he would have about 5,000 SKUs. If we make it that simple, you can onboard 6 crore traders of this country, 6 crore, 60 million traders across tier 4, tier 3 and tier 2 cities who are there. Now, this is a huge opportunity that is yet to be tapped. जो लोग already e-commerce का use कर रहे हैं, they are better in the sense technology को adapt कर चुके हैं. They know how to create a catalog, how to accept orders, how to fulfill orders and how to manage their inventory. वो पूरा end-to-end काम सब अपने आप कर पा रहे हैं. लेकिन हमारा requirement वो नहीं है, वो already कर रहे हैं. कुछ लोग कर रहे हैं. Requirement है हमारा tier 3, tier 4 में जाने का. वो छोटे छोटे दुकानदार जो सब्जी वाला हमारे घर के बगल में सड़क पे बैठता है, क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं? जो पान वाले की दुकान है, क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप के बजाय कुछ ऐसा नेटवर्क हो जो कि एक किसी भी एक चीज पर आपको देखना है पान का है और मेरे बगल में जो सबसे नियरेस्ट पान वाला है वो मुझे दिखे कि ये पान वाला है जो मुझे 15 मिनट में दे सकता है. ये विजन है ONDC का. और जब हमने इसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा कि जैसे UPI है, फॉर एग्जांपल, यू आर ऑल अवेयर विथ UPI. एवरीबडी इज, आई एम श्योर एवरीबडी हियर इज यूजिंग UPI. जस्ट टू टेक 1 minute ऑन व्हाट इज UPI. हमारे देश में लेट्स से देयर आर 500 बैंक्स और उन बैंक को, अगर एक बैंक को, बिकॉज बैंक का सिस्टम ही ऐसा होता है कि उसको सारे बैंक्स के साथ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने, राइट. नाउ अगर एक बैंक को 500 बैंकों के साथ इंटरैक्ट करना है तो उसको 499 बार 2-way कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. इज दैट राइट? ओके. और 500 को हर एक को इसी बार इतना इतना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरा एक इंटरऑपरेबल सिस्टम बनेगा. लेकिन UPI ने क्या किया? UPI ने कहा कि ओके, एक बैंक को दूसरे बैंक से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो करनी है उसके लिए लेट्स क्रिएट ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट. एक उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि एक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए एक ये प्रोटोकॉल है. तो जो भी उस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करेगा, उस नेटवर्क में जितने भी बैंक्स आएंगे, आज की तारीख में 350 से ज्यादा बैंक्स UPI को अडॉप्ट कर चुके हैं. और रिजल्ट ये है कि कोई भी बैंक का कोई भी आदमी किसी भी दूसरे 350 बैंक को कर सकता है. हर बैंक का IT सिस्टम अपना अपना अलग अलग है, बट दे हैव जस्ट क्रिएटेड APIs टू कनेक्ट इटसेल्फ विद UPI. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. इज इट राइट? नाउ दिस इज व्हाट वी थॉट, कैन दिस बी डन फॉर ई-कॉमर्स? इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मैंने GST की साइट से चेक कराया. यू नो हाउ मेनी कंपनीज हैव रजिस्टर्ड, हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स आर रजिस्टर्ड इन इंडिया? Any idea? No, you've been dealing with e-commerce. You must be knowing it. Any idea? Any guesses? How many e-commerce platforms do we have in India? Anyone? How much? Sorry? 1 lakh is no. 1 lakh is not there. We have about 7,000. 7,000 e-commerce platforms are registered with GST. Right? This number may have changed slightly. बट 7,000, हम तो केवल 2 या 3 की बात करते हैं, राइट. सो 7,000 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर रजिस्टर्ड विद GST. मोर देन दैट, दिस इंफॉर्मेशन मे बी डेटेड. तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर एक दूसरे से बात करनी है तो कैसे करेंगे? कैन वी क्रिएट अ कॉमन प्रोटोकॉल वेयर ऑल ऑफ देम कैन कम टुगेदर एंड टॉक टू ईच अदर? तो दैट वाज द आइडिया. नाउ सपोजिंग यू टेक वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, किसी एक प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं. उस प्लेटफॉर्म पे सपोजिंग यू आर ए सेलर, आप यू सेल समथिंग. आप अभी D2C ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. आपका एक प्रोडक्ट है, सपोजिंग यू हैव अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल. तो आपको अगर अपना वेबसाइट बनाना है, अपना पोर्टल बनाना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को डिजिटली उसका कैटलॉग बनाइए, क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंस एज अ सेलर, राइट. देन लुक फॉर बायर्स. यू हैव टू गेट बायर्स ऑल्सो on your own platform. If you don't get buyers, you don't sell, right? You have to get buyers. आपको सारा एफर्ट करना पड़ेगा कि सारी दुनिया में ढूंढ करके बायर्स को लाइए, तब आपका सेल शुरू होगा. बायर और सेलर तो केवल 2 पार्ट है. इनके बीच में एक्सचेंज क्या हो रहा है? वन इज मनी, पेमेंट. पेमेंट हैज टू गो फ्रॉम बायर टू द सेलर.
एंड फाइनली द गुड हैज टू ट्रेवल फ्रॉम सेलर टू द बायर. तो वो लॉजिस्टिक वाला पोर्शन भी है. सो देर आर 4 पार्ट्स टू एनी एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस, राइट? देर आर 4 पार्ट्स. सो व्हाट ONDC डज इज, हमने कहा इन चारों को अलग अलग कर देते हैं. सो चारों को अनबंडलिंग कर दिया. मतलब बायर अलग हो गया, सेलर अलग हो गया, पेमेंट का सिस्टम अलग कर दिया और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को अलग कर दिया. एवरीथिंग इज अ सेपरेट सर्विस. ये 4 सर्विसेज हो गई. तो अनबंडल कर दिया. और अब ये आपस में इंटरैक्ट करें, इसका क्या हम कोई स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बना सकते हैं? सो दिस इज व्हाट ONDC डज. सो वी हैव क्रिएटेड प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरैक्शन बिटवीन these 4 elements which are engaged in e-commerce. This is what is ONDC. So ONDC is not a platform. So we are not Unicommerce, right? What we are not, government is not trying to create any platform. We are not getting into business. We are only creating standards. कि ये standard है और इन standards के basis पे अगर आप interact करें, please look, if you find value, please join us. This is what we are saying, right? So whole lot of people, including you, have seen value कि ये है और ये important चीज़ है. This could be the way forward. Now, अब इसका पोटेंशियल क्या है? सी वी आर एक्चुअली ONDC, तो हमने जब इसको शुरू किया DPIIT में, आपदा में अवसर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर हम लोगों ने ढूंढा. और 2 साल के बाद, कोविड से निकलने के बाद में, एज ए कंट्री, एज ए नेशन, ऑल ऑफ अस फील मोर प्राउड ऑफ दिस कंट्री. वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्लेस ऑन दिस अर्थ. इज दैट राइट और नॉट? राइट? सो वी हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हम जो कर रहे हैं वो हम यहां से शुरू करेंगे, लेकिन हम दुनिया को चेंज करेंगे. अब आप ये देखिए, हम लोगों ने शुरू किया, वी हैड ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनलाइज करने में गवर्नमेंट का थॉट क्या था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. वी वर वेरी क्लियर दैट गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग इनटू बिजनेस एंड वी वांटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशनलाइज उसको करना है. इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट हैज दैट टैलेंट, इट हैज दैट स्टार्टअप माइंडसेट जो कि कंटिन्यूअसली इनोवेट करे, बिकॉज रोज नई नई चीजें आती हैं. यू नीड टू इनोवेट कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली बेसिस. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट सर्वाइविंग दिस वर्ल्ड. कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है. सो देयर हैज टू बी दिस स्टार्टअप माइंडसेट. सो वी नीडेड पीपल, द बेस्ट ऑफ द टैलेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. नाउ यू गेट दैट institution, but you needed that government scale. Startup mindset with government scale. Now that is the primary foundation of ONDC as an institution. We went one step ahead. We said because it is kind of a public digital good that we are trying to create, we will not create as a profit-making company. It is now institutionalized as a non-profit Section 8 company. एंड उसमें जब हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमारे देश के सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बात की, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एवरीबडी एग्रीड. एंड वी हैड ऑन वन सिंगल कॉल विथ, on one evening we had 255 crores raised. 255 crores on a call of 1 hour. That was the kind of money that we raised. My team said, sir, we need 160 crores if we were to survive for 3 years. So in one call, we gave them 255 crores. And we've said, don't charge anything from anyone as of now. Just behave like UPI. You are here to create standards, develop networks, facilitate interaction. Abhi, aap isko kariye. So let us see how and where do we go. Now, having institutionalized this company, incorporated this company on December 30th last year, we are about 8 months old. We are very proud to say that we are a startup. It's a startup. It's our own startup. Aapka hai. You are as much a part of that startup as I am, or as those 25, 30 people working there are. And like a true startup, we don't have an office today, so we are working out of a co-working space in Gurgaon. We are working, हमारा ऑफिस भी बन रहा है, but 2 महीना लगेगा अब इसको बनने में. So we can't waste time. We are working out of a co-working space. And we are working at breakneck speed. आपने देखा होगा, हमारी team members are traveling across the country, meeting everyone across the board, trying to educate people, trying to motivate people, trying to make them see reason in what we are doing.
And there are a whole lot of counter questions, of course. You know, we are asked fundamentally, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बात तो ये पूछी जाती है कि गवर्नमेंट का क्या काम है, why should government get into business? So that is the first question that we ask. And we are very clear, as I explained, we are not getting into business. We are only trying to create standards and motivating people to use those standards voluntarily for interaction amongst partners who are part of the e-commerce domain. This is what we are doing. It is like, you know, BIS makes standards for, let's say, air conditioners. या दूसरी चीज़ों के लिए standards बनाते हैं. वो standards voluntary हैं. Many of them are voluntary. So ONDC is like voluntary standards, जिसको 7,000, 8,000 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको ONDC पे आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो मत आइए. बट हमें विश्वास है कि आप इसमें वैल्यू देखेंगे. And over a period of time, you will feel like joining it for your own benefit. Second question we are asked is, and which is very, very valid question, कि existing e-commerce platforms have developed such good consumer interface. They give such beautiful consumer satisfaction, customer satisfaction. कैंसिलेशन का इतना सिंपल सिस्टम है, रिटर्न्स का इतना सिंपल सिस्टम है, रिफंड्स, कैंसिलेशन, ये सब आप कैसे करेंगे? आपका तो नेटवर्क है, सब लोग अलग अलग हैं, 4 उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपने सबको अलग अलग कर दिया, अब ये कैसे काम करेगा? हमारा एक सिंपल सा जवाब है. हमारे सारे लोगों ने, सारे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ने मिल करके एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेंचमार्क बना के उस सिस्टम को बेटर करने के लिए प्रोसेसेस क्रिएट किए. एंड वी आर कमिंग आउट एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद दैट. वेरी सून वी आर कमिंग आउट एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. और उसमें वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स दैट. आफ्टर ऑल, यू सी, ONDC is, what is it? It is India's startup. It is based on open source methodology. और हम अगर इंडियंस किसी काम में लग जाएं तो हम वर्ल्ड में बेस्ट काम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. इफ यू आस्क मी टुडे, इफ यू स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर. बट मुझे इतना पता है कि हमारी नीयत साफ है, जो डायरेक्शन हमने लिया वो बिल्कुल सही है, और हम सबकी कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव हमारी विजडम है, वो हमें जरूर इन क्वेश्चंस का सही आंसर देगी. आज नहीं मिलेगा लेकिन कल मिलेगा, बट वी विल गेट देयर. सो वी आर एक्सट्रीमली होपफुल एंड पॉजिटिव दैट विद कोलैबोरेटिव एफर्ट, विद द काइंड ऑफ ओपननेस विद विच वी आर वर्किंग, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है. एवरीथिंग इज ओपन. एवरीथिंग इज ओपन. इट इज ओपन टू द कॉम्पिटिटर्स हु बिलीव कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. फाइन, ओके, लेट अस सी. एक विश्वास के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ, और इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया के टैलेंट के विश्वास के साथ ये नेटवर्क की परिकल्पना हुई है, और हमें विश्वास है कि ये हम सक्सेसफुल होंगे. यहां आज जितने लोग बैठे हैं, मुझे आपसे केवल ये कहना है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझिए. इट इज टू शॉर्ट अ टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस, बट आई थिंक माई CBO was here and he explained certain things. See, गवर्नमेंट का क्या काम है इसमें? हम कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हम मोटिवेट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को कि इसमें वैल्यू देखिए और इसको ज्वाइन करिए. हमारे 6 करोड़ छोटे छोटे व्यापारी हैं, 6 करोड़, 6 करोड़, जो गांव में हैं, छोटे छोटे जगहों पर है. मैं आपसे इस बात का आह्वान करता हूं कि आप उनके लिए काम करिए. और सुनिए, वो लोग अंग्रेजी में काम नहीं करते. अंग्रेजी बोलने वाले 10% लोग हैं इस देश में. 90% लोग अपनी मातृभाषा में काम करते हैं. आपका टियर 2 में, टियर 3 में, गांवों में जितना इंटरैक्शन आपस में होता है, जितना ट्रेड आपस में होता है, वो सारा लोकल लैंग्वेज में होता है. नाउ यू सी, हम इसमें कैसे पोटेंशियल देख रहे हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक कॉलेज के स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर वो कर्नाटक के हैं या बेंगलोर के हैं, या लेट्स से किसी भी असम का ले लीजिए, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम इसके बारे में
एजुकेट करें और वो अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों के लिए बायर ऐप बनाए या सेलर ऐप्स बनाए. एंड यू सी इसमें बिकॉज आफ्टर ऑल यहां तो सारा का सारा एग्रीगेट हो रहा है, सारे बायर्स एक साथ आ रहे हैं, सारे सेलर्स एक साथ आ रहे हैं, दे विल गेट अ ह्यूज मार्केट. और इसलिए हमें वी आर लुकिंग एट thousands of such small companies which are serving local customers, local demand, local sellers and local buyers to come across the country. They may be actually with the translation and everything that we have start locally, but they may actually be able to do a global kind of business. That is this is the huge potential that we have here for ONDC. We are also saying that जो हमारा जेम प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वी हैव अ जेम प्लेटफॉर्म, whole lot of buyers, whole lot of sellers are onboarded onto it, and all government of India entities are mandated by the government to buy only from GEM platform on all the goods and services that are available on that platform. Now we want to extend GEM platform on ONDC network. इसका क्या impact होगा कि जो sellers अभी GEM पे हैं, they will get a huge market outside GEM. Public procurement entities के बाहर they can get a huge market. We are trying to get खादी, KVIC, पूरा का पूरा जो खादी का जितना है, हम उसको ONDC पे लाना चाहते हैं. हम ODOP प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा वर्टिकल क्रिएट हो रहा है. जैसे यूपी में they've done 1600 crores in 1 year. ODOP, UP has done 1600 crores on one platform in one financial year. Now that is the kind of potential that we have. And it is just one state. Now ODOP thing is going across the country. और हमारे 36 states और union territories हैं. वहाँ पर सबका अपना अपना local products हैं, जिसको हम at least national market देना चाहते हैं, जो हम दे सकते हैं. Then we want handlooms. जितने DC handlooms के यहाँ जितने registered हैं, handicraft में जितने registered हैं. Now, when we talk to these organizations, these are all सरकारी organizations. Now, you see, अगर हम ये expect करें कि ये सरकारी organization ONDC के लिए ऐप बनाए और seller करे, ये नहीं हो सकता. It is not possible. What is the best model available? The best model is, like you have done Unicommerce. Can you not create white labeled apps, buyer apps and seller apps, and then give it to these organizations? Maybe run for them, and we could have a number of such players where we could do price discovery, and then, so for example, GEM could directly buy one particular service from one company and say, okay, now you implement ONDC for us. Now DC Handloom says, okay, now this company will do ONDC for us. However, it will be branded as GEM or this thing. Now, these are the kind of potentials that we are looking at. And this is just the beginning. I remember when we were doing Startup India, in 2017, I was assigned that responsibility. 2016 में जब ऑनरेबल पीएम ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो किसी को पता नहीं था कि स्टार्टअप होता क्या है. आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करेंगे कि 2016 में नोबडी न्यू कि स्टार्टअप होता क्या है. हमको तो नहीं पता था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था. कुणाल को पता होगा, आप लोग सब जो बाहर रहे उनको पता होगा, हमें तो नहीं मालूम था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वी डिड नॉट हैव कैपेसिटीज ऑन व्हाट वाज अ स्टार्टअप एंड हाउ टू डेवलप दैट. But we have done that systematically over a period of time. सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में स्टार्टअप्स के बारे में एजुकेट किया, स्टेट गवर्नमेंट्स में एजुकेट किया, यूटीज में एजुकेट किया, एंड देन वी क्रिएटेड रैंकिंग फ्रेमवर्क टू डेवलप स्टार्टअप इकोसिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री. और उसका रिजल्ट ये है जो आज हमें यहाँ इस हॉल में देखने को मिलता है. एंड वी से विथ सो मच ऑफ प्राइड दैट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. नाउ दैट इज व्हाट ऑल ऑफ यू हैव डन. This is the kind of thing that I am looking at for ONDC also. Now ONDC is not, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसका रिजल्ट 2 महीने में मिल जाएगा, 4 महीने में मिल जाएगा. This is something which will build up over a period of time, but it will positively do something. This is, I somehow have a feeling, going forward in the next 2 to 3 years, ONDC is going to be a global brand. It is going to be a global brand. When we started, people said,
ONDC का नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओपन नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ONDC क्या, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं. Now this was, when we were launching this about a year ago, and today I don't think that's an issue anymore. So this is how probably brands are built. We are trying to build a brand. Not exactly brand, we are trying to do something, and brand is being built because of its character. So brand होता क्या ultimately? Brand is about the character. उस चीज़ का अंदर का character क्या है? कितनी उसमें strength है? What are the values and norms that it represents is what is a character. And हमारा ONDC is based on openness. It's about transparency. And I have a feeling that going forward, we are going to be asking e-commerce companies, are you open? If you are not open, I am not transacting with you. Now, that is the kind of thing. Like, you have all these sustainability goals कि आपके फैक्ट्री में बच्चे तो काम नहीं करते हैं. अगर आप वो काम करते हैं तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे, राइट? आपकी ये जो फर्नीचर है, इसमें जो लकड़ी यूज़ हो रही है, ये सस्टेनेबल है या नहीं? इसकी जो वैल्यू चेन है या इसकी जो कस्टडी चेन ऑफ कस्टडी है, वो सर्टिफाइड है या नहीं है? If it is not there, we are not buying this. I foresee a day when consumers and the sellers are going to be asking companies, are you open? If you are not open, I am not coming onto your platform. So friends, this is the vision that we have for ONDC. We can have as much of interaction if you are interested. Our teams are there. We'll do anything that we can for, looking at whatever interest you have in this. I would strongly recommend have a look at what it is and think about joining ONDC. Thank you very much. Thank you, Shri Anil Agrawal, sir. On behalf of entire Unicommerce team and everyone present here today, we would like to take this opportunity to thank you for taking time out from your busy schedule and gracing us with your presence. Your thoughts and inputs today were extremely insightful. The audience is definitely feeling motivated about the future of e-commerce and ONDC in particular. I'm sure there are plenty of budding entrepreneurs who wanted to start their own business and will definitely benefit from your expert advice and building and contributing to the ONDC network. As much as we enjoyed the session, we hope all of you did as well. Once again, thank you for meeting us, sir, today.